quantifiers. The topic was quantifiers, and under the heading of quantifiers, we have discussed two types of quantifier. The first one was universal quantifier, and the second one was existential quantifier. So there are two types of quantifiers which we have discussed in the previous class. Now let us move further. How to find out the negation of a quantifier or a negation of a quantified preposition. Negation of a quantified preposition. So you all know that preposition is a statement, and we have to find out the negation of that. And under the heading of a quantifiers, we have to find out the negation of the quantified statements or quantified prepositions. Just like that. Suppose we have a simple statement. The statement is all boys can run faster than all girls. All boys can run faster than all girls. This is a simple statement from English language, and you know that we have to find out the negation of that. So the negation of that means some boys can run faster than some girls. So that will be the negation of this statement, that some boys can run faster than some girls. अब इसमें आप लोग इस तरह से नहीं सोच सकते हैं कि all boys cannot run faster than all girls. इसका मतलब हुआ कि कुछ इसका अगर हम नेगेटिव सेंस में भी लें तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि some of the boys can run faster than some girls. So this is the negative of this preposition. And we also have one more example. The example is all students pass the semester exam. All students pass the semester exam. So the negative of this is some students do not pass the semester exam. Do not pass the semester exam. This is a simple meaning or simple negative of a preposition in terms of English language. Okay, we can also move like that. Some students do not live in hostel. So we also have another statement that some students do not live in hostel, and its a negative is all students live in hostel. This will be the negative of this preposition. Now let us come to the main part in terms of quantifiers. So in terms of quantifiers, you know that the quantifiers are of two type. That is, the first one is universal, and this is existential, and which means they exist. This was discussed earlier, and the most negative part of a statement can be expressed with the help of De Morgan's law. So the simple De Morgan's laws are negative of P conjunction Q is equivalent to negative P disjunction negative Q. This is your first De Morgan law, and similarly the second De Morgan law is negative of P disjunction Q is equivalent to negative P conjunction negative Q. This is the second De Morgan law. तो डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा लॉ है जो नेगेटिव बताता है. दिस इज नेगेटिंग पी कंजंक्शन क्यू. सिमिलरली दिस लॉ इज नेगेटिंग पी डिसजंक्शन क्यू, और उसका नेगेटिव क्या आ जाता है, ये आ जाता है. दिस इज द डी मॉर्गन लॉ. अगर हम क्वांटिफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो डी मॉर्गन्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड लाइक दैट,
negative of a quantifier. The first one is universal. So negative of a universal quantifier is that x such that px and that will be equivalent to. अब क्वांटिफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि फॉर ऑल मीन फॉर ऑल, सम मीन देयर एग्जिस्ट सम. सो these English language statements are negative in terms of quantifiers. If all is there, then you can negate it to some. Just like that, all students live in hostel. So its negative will be some students live in hostel. So the negative of a universal quantifier is like that. That is equivalent to there exists x such that negative of px. So just see, negative of all mean negative of for all. अब यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, नेगेटिव फॉर ऑल. इसी स्टेटमेंट को, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ऑल स्टूडेंट्स पास सेमेस्टर एग्जाम, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो फॉर ऑल मीन ऑल एक्स पी एक्स होल्ड. इट मीन ऑल स्टूडेंट्स पास सेमेस्टर एग्जाम and it's a negative mean negate this statement or this preposition. So its a negative will be there exist some students such that who do not pass the semester exam. So सारे के सारे ऐसे नहीं है जिन्होंने सेमेस्टर एग्जाम पास नहीं करा है, because we are finding the negative of a statement or of a preposition in terms of quantifiers. And just the heading, negation of a quantified preposition we are doing. So this is your first De Morgan law, and similarly your next De Morgan law is negative of there exists x p x is equivalent to for all x is negative of px. So इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं. सम स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल. You can say this statement like that. Some students live in hostel, and its negative will be all students do not live in hostel. All students who do not live in hostel. So that will be the negative of that. अगर हम क्लासरूम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं some girls are more intelligent than boys. You can take this statement because we are using there exist. So some girls are more intelligent than boys, and its negative will be all girls are more intelligent than some boys. अब दूसरी तरफ से भी आपको नेगेटिव करना पड़ेगा. Some girls are intelligent than all boys. अब उधर all boys हैं. Some girls are intelligent than all boys, and its negative will be all girls students are intelligent than some boys. अब all का some हो जाएगा और some का all हो जाएगा. तो this is the De Morgan law in terms of quantified statement. इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जांपल लेकर के भी बता सकते हैं. The first example is there exists x belonging to universal set. You can keep it in the bracket such that x plus 6 is equal to 25, and you have to negate this statement. इसका नेगेटिव फाइंड करना है. So there exists है तो उसका नेगेटिव like this, negative of there exists x belongs to universal, and such that x plus 6 is equal to 25. So its negative is equivalent to just like this, equivalence का साइन डाल दीजिए. Negative of there exists mean for all x belonging to
universal set, negation of x plus 6 is equal to 25. ऐसे कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट ना भी डालो तो चलेगा. And that is equivalent to for all x in U. इसका मतलब ये होगा सारे के सारे जो x हैं यूनिवर्सल सेट में, and that will satisfy this statement now. अब this statement क्या है, x plus 6 का जो नेगेटिव है वो 25 के इक्वल है. x plus 6 का नेगेटिव, तो what does it mean? x plus 6 का नेगेटिव 25 के इक्वल है, लेकिन x plus 6 वो 25 के इक्वल नहीं है. दिस इज डी मॉर्गन लॉ. So x plus 6 is not equal to 25. So this can also be written in bracket. So this is your first example of negation of a quantifier, and the quantifier we have used is existential. Similarly, we can take the example that is the negative of a universal quantifier. Negative of a universal for all x in universal set U such that x is 25. So original जो statement है वो ये है. This is statement or original proposition we have for all x in the universal set. x is less than 25. जितने भी universal set में elements हैं उनके लिए x is always में जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे लेस देन 25 है. दिस इज द मीनिंग. एंड नेगेटिव ऑफ दैट विल बी जस्ट इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट x in universal such that will be the negation of x less than 25, and such that there exists x in U. U is the universal set, and इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई ऐसा एक x एग्जिस्ट करता है in the universal set that is satisfying the negative of this statement. Negative of this statement mean x less than 25 का सीधा सीधा मीनिंग हुआ कि x less than 25, the negative of x less than 25 is x greater than or equal to 25. It mean ऐसा x exist करेगा इस यूनिवर्सल में जिसके लिए this statement is true. X is greater than or equal to 25. There exists an x. So this is the meaning of universal quantifier, or this is the negative of universal quantifier is existential quantifier. I am explaining it again. You have to find out the negative of this proposition. The proposition is for all x in a universal set, x is satisfying that is less than 25. So सारे के सारे जो x हैं इसमें वो सारे के सारे less than 25, like this 1, 2, 3 up to 24 we can say. So 1 to 24 are the elements for all x in this, but we have to find out the negative of this. So a negative of this mean there exist, इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा. there exist is used for some may be one or more, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा, और जनरली we take more than one. So there exists some x in this universal, there should exist, so that x should be greater than or equal to 25. So this is the negation of quantified proposition. We can also take example in this term for all x px. Px is a proposition that is conjunction. There exists x y, that is qy. Y is satisfying qy proposition. So px is p can be written small px and small qy. Now you just need to see, you have to negate this. So negate mean
negative of this preposition we have to find out. So that state preposition is equivalent to, you will use De Morgan law. If we take it as P and we take it as Q, so P conjunction Q negative is equivalent to negative P disjunction negative Q. So you can write on negative of for all x Px disjunction negative of there exists y q of y. So this is we have to do, and we know that negative of for all mean universal quantifier can be used like this. There exists x such that a negative px disjunction and a negative of existential quantifier can be written like that, universal quantifier for all y negative of qy can be written. Now this is the resultant statement we have, or this is the resultant proposition. So by this way we can find out the negation of a quantified proposition. इस प्रपोजिशन में एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर था, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। दोनों यूनिवर्सल भी हो सकते हैं और दोनों एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी हो सकते हैं। Suppose we have there exists x such that px is there, and we will have disjunction there exists y such that qy, दोनों में अब existential quantifier है, so the negative of this we need to find out. So equivalent to by De Morgan law, there exists x px and that will become conjunction now, negative of there exists y qy, and this proposition is equivalent to existential quantifier will become universal for all x negative of px conjunction for all y negative of qy. So this will be your resulting proposition. Negation of this given proposition can be done. Now we have another way to find out whether the statement is the false statement or it is a true statement. This is another way to check the validity of a statement. So this is, we call it as whether the proposition is a valid proposition or not. So we can name it as valid argument. कोई argument valid कब होता है? An argument is called a valid argument if the conclusion is true whenever all the premises are true. If the conclusion comes out to be true, then the argument is said to be a valid argument. The argument is also valid if and only if ending of the group of preposition implies conclusion is a tautology. Tautology आपको पता ही है, जब आपकी वैल्यूज ट्रू वैल्यूज आए तो वो टोटोलॉजी बन जाता है। तो हम दूसरे तरफ से भी अगर बोलें तो कोई आर्गुमेंट वैलिड कब होएगा? जब आपके पास जो आउटपुट है वो टोटोलॉजी की फॉर्म में आ जाए। एंड आर्गुमेंट is actually what is argument? Argument is an assertion that is a group of prepositions. Argument is assertion that is a group of prepositions. Assertion भी बोलते हैं, group of prepositions भी को बोलते हैं, और इसको premises भी बोल देते हैं, premises भी बोल देते हैं, ये भी इसी का नेम है। Yields another preposition, और उसमें जो conclusion preposition है वो अगर true आ जाए तो वो valid argument, otherwise
नॉट ए वैलिड आर्गूमेंट, और जो वैलिड आर्गूमेंट नहीं होता वो फालसी होता है. द आर्गूमेंट विच इज नॉट वैलिड, दैट इज ए फालसी आर्गूमेंट और इनवैलिड आर्गूमेंट. इसके लिए हमें कुछ वैलिड फॉर्म्स चाहिए जो हमें पता होनी चाहिए. द फर्स्ट वन इज मोडस. ये एक तरह से डेफिनेशंस हैं, जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, आइडोपोटेंट लॉ, अब्जॉर्प्शन लॉ, बूलियन अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं. वैसे ये कुछ स्टैंडर्ड वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं, बेसिक वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स. द फर्स्ट वन इज modus ponens. This is the name, that is the P implies Q and P therefore Q. This is your first one. And the second one is modus tollens. Modus tollens, P implies Q and negative Q, therefore negative P. This is your modus tollens. And the third one is hypothetical syllogism, and it gives us P conditional Q and Q conditional R. This is just similar to transitive property. P implies R. P implies Q, Q implies R, so P implies R. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रिलेशंस में भी ऐसा ही होता है, ये हम लोग करेंगे रिलेशंस में. फोर्थ वन इज disjunctive syllogism, and it says that P disjunction Q, so negative P, therefore Q. Hypothetical is very much useful, you must remember. The next one is constructive dilemma. And this can be written like this: P implies Q and conjunction R implies S statement, so P disjunction R, therefore Q disjunction S. And the fifth one is this was your fifth one, and this is your sixth: absorption law or absorption property. This is also useful in Boolean algebra. P implies Q, so therefore P implies P conjunction Q. This is very much useful. The seventh one is simplification. And that is P conjunction Q, therefore P. And eighth one is conjunction. We already know, this is your basic. So if P is there, if Q is there, we can find out the conjunction of P and Q. Similarly, we can find out disjunction. Disjunction is also said to be addition. Addition is there. So sorry, this is not disjunction. This is a different. This is addition. So P is there. So P or Q, that is disjunction. Like disjunction is there. Now, these 7 elementary valid argument forms we must remember, and we must know how to apply. Now, let us check how to apply, or how the question may come. The question is like this: show that the following rule is valid, and the rule is P, and that is P disjunction Q, or P, therefore P disjunction Q.
I am again repeating. So P, so that P disjunction Q, this is sort of addition rule we have, and this is a P, so that P disjunction Q is there. Now, how to check the validity? We have to verify the validity of these arguments, and for this we require truth table. So PQ and P disjunction Q. So we can take the truth values. So for this we will have T T F F, and the second column T F T F. Now you can find out P disjunction Q, that is T T F F. Now you notice here we have a P, and here we have P disjunction Q. So just see P. P is true in one and two place. So this is first place, second place, third place, fourth place. So P is true in two places, one and two. And similarly, P disjunction Q is true in two places, that is 1 and 2. So if it is commonly true in one line, then the argument is said to be a valid argument. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें, अगर वो एक भी पोजीशन पर ट्रू वैल्यूज दे रहा है, चलो ये तो दोनों पोजीशन पर दोनों मैच कर गए, मान लीजिए इट इज ट्रू एट 1 and 3 and it is true at 1 and 4 suppose, so 4 भी नहीं, 2 ही रहने दीजिए. अब देखिए ये 1 और जो 1 प्लेस है वो मैच कर रहा है. So this is commonly true at first place. So you can mark it like this. ये first place पर first और जो third column है जो हमें चाहिए, ये दोनों true values दे रहे हैं. तो इसका मतलब the argument is said to be valid argument. अगर वो किसी भी प्लेस पर ट्रू वैल्यूज कॉमनली ना दें, कॉमनली का मतलब अगर फर्स्ट प्लेस पर वो पी ट्रू है तो पी डिजंक्शन क्यू फर्स्ट प्लेस पर ट्रू ना हो, वो थर्ड प्लेस पर ट्रू हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट गेटिंग ए टोटोलॉजी. जस्ट सी, because for the valid argument we should have a tautology in the outcome. So tautology means the both values should be true. So at the common place the values should be true, then the argument is said to be a valid argument. But in now our case, हमारे केस में ये दो जगह पर ट्रू वैल्यू कॉमनली दे रहा है. सो वो वन प्लेस पर भी दे रहा है और वो टू प्लेस पर भी दे रहा है. तो यहाँ पर भी वो ट्रू वैल्यू ही दे रहा है, तो प्लेस पर भी वो ट्रू है और सेकंड प्लेस पर भी दोनों की ट्रू वैल्यूज है. मीन्स टू से दैट टोटोलॉजी बन रही है. सो द आर्गुमेंट इज सेड टू बी ए वैलिड आर्गुमेंट. और अगर वो वैलिड ना बनेगा तो फिर वो फालसी बनेगा. सिमिलरली वी हैव वन मोर modus ponens. Modus ponens was that P implies Q. P is there, Q is there. You can check the statement of modus ponens. This one, first one is there. We have to check the validity of a modus ponens. So for this, we again require P and Q. So PQ, you can take the values, that is T, T, F, and F. This is TF, this is TF. Now you can find out the conditional of P implies Q. So P implies Q will give you T. If both are true, यही conditional का meaning होता है. If both are true values, or if P is false, then it will also give true values. Now you can check the first and this one. P is true in first place and second place, and P implies Q is true in first, third, and fourth place. So you can check again. P is true
in first and second place. P implies Q is true in first and third and fourth place. So commonly true है वो first place पर. So both are P and P imply Q are commonly true at one place. So it means it is producing tautology at both the places, and hence we can say that the argument is a valid argument. And वैलिड आर्गूमेंट एक और तरीका है, क्योंकि वो P और Q भी है मॉडुलस पोनम में. दोबारा से देखिए स्टेटमेंट को. मॉडुलस पोनम्स में P implies Q मीन P भी और Q भी, ये तीनों को चेक करना है हमने. तो साथ में Q को भी देखिए आप. Q इज ट्रू एट फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस. नाउ अब ये फर्स्ट थर्ड पर है, ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ पर है, एंड P फर्स्ट सेकंड पर है, और कॉमनली ट्रू है फर्स्ट प्लेस पर. सो P implies Q and Q are commonly true or producing a tautology at place one. So it is also a valid argument. ऐसे ही हम लोग सभी का चेक कर सकते हैं. ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने दी हैं, इन सभी का हम लोग जो चेक कर सकते हैं कि whether these are valid arguments or not valid. Obviously these are standard ones and these will be valid arguments. सिंप्लीफिकेशन को भी देख सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास P कंजंक्शन Q है. सेवंथ वन इज देयर P कंजंक्शन Q एंड P. तो यू कैन फाइंड आउट P कंजंक्शन Q. इसी सेम कर लेते हैं. P कंजंक्शन Q विल गिव यू T एंड F F F, क्योंकि दोनों की वैल्यू ट्रू होएगी तभी वो ट्रू होएगा. P और Q ट्रू है सिर्फ फर्स्ट केस में. अब फिर दोबारा से वो फर्स्ट प्लेस पर ही ट्रू ट्रू वैल्यू आ रही है सिंप्लीफिकेशन में. सो P एंड P कंजंक्शन Q, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन कॉलम्स आर, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम फर्स्ट प्लेस पर ही ट्रू है. सो इट आर प्रोड्यूसिंग टोटोलॉजी एट फर्स्ट प्लेस. सो इट इज आल्सो ए वैलिड आर्गुमेंट. ये वैलिड आर्गुमेंट चेक करने का मेथड है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. ऐसे ही हमारे पास अब्जॉर्प्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें जरूर पता होना चाहिए, वेदर इट इज वैलिड और नॉट. सो P implies Q is there and P implies P conjunction Q is there. So we can check for the validity. This is the absorption property. So it should be a tautology. Tautology, which one will be a tautology? P implies Q implies P conjunction Q. So we should have to check whether this is a valid argument or not. This will be a valid argument. ये तो होएगा ही होएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है. T T F और F. This is T F T F. Now you can find out P कंजंक्शन Q. दोनों की ट्रू वैल्यूज यहाँ पर होंगी, वही ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा कंजंक्शन के केस में. एंड P implies Q will be true when both are true and if P is false. So first, third and fourth is true, second one is false. And next we need to check this. So P implies P conjunction Q. So for this, what we need to check, first and third one, and that will be true, and if P is false, it will again be true. So T F T T will be the output. Now it is a valid argument because P implies Q and this one. Just see, this is the absorption property. Absorption property में ये valid argument, क्योंकि ये देखिए first place true value, third place true value, fourth place true value. वो एक प्लेस पर भी कॉमन अगर वैल्यू दे रहा होगा तो वो ट्रू होएगा. बट हमारा क्वेश्चन है इसको चेक करना, बिकॉज दिस इज फर्दर एक्सटेंशन ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी. रिमेंबर,
This is further absorption extension of absorption property. इसको भी आपने याद रखना है. So P implies Q implies P conjunction Q. And what is this one? This is this column named as a star, and the P implies Q is this one. So this is this one. अब इन दोनों कॉलम को आपने कंडीशनल करना है. So when both are same truth values, so this will give you T. And if P is false, if first is false, it will also give you T. So just see, अब इसमें चारों ही वैल्यूज ट्रू आ गई हैं, बट इसको इसकी वैलिडिटी अगर चेक करनी है तो ये कॉलम और दिस वन, इसके साथ अगर चेक करना है तो फर्स्ट और फर्स्ट, थर्ड और थर्ड, फोर्थ और फोर्थ पर ट्रू वैल्यूज दे रहे हैं. सो दिस इज द प्रोसीजर टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट और ए प्रपोजिशन. तो ट्रुथ वैल्यू और ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं. ओके, वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सपोज द क्वेश्चन इज टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट, एंड द फर्स्ट वन इज P, and P is I will select in IAS exam, and the second one is Q, I am going to London. ये मैंने दिया नेमिंग. एक्चुअली में स्टेटमेंट ये है, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट इज if I will select in, if I will, this is your question actually, if I will select in IAS exam, then I will not be able to go to London. This is the statement, and you have to check the validity of this statement, that it is clear, if I will select in IAS examination, then I will not be able to go to London. This is the first one, and the second one भी उन्होंने दिया है साथ ही में, since I am going to London, I will not select in IAS examination. So this is also given to us, and it is given, अगर P है, अगर मैं IAS में select हो जाता हूँ, then P implies negative of Q. Negative of Q mean Q is I am going to London, so negative of Q mean I will not go to London. And the second one is, since I am going to London, comma, I will not select in examination. So if since I will go to London will be represented like Q, I will not select in IAS examination. So these are the three. You have to check the validity by drawing the truth table values. So take a P and Q. So this is a T, T, F, F, and this is T, F, T, F. And because we require a negative, so negative of P we require, and negative of Q we also require, and P implies negative Q also required. So negative P is a false, false, true, true, and negative Q means false, true, false, true, and P implies a negative Q. P implies a negative Q, conditional. If both are true, then it is true, and if P is false, false is in third and fourth case, so it will again true and true. But first one is false. Now you have to verify the validity of the arguments. Now the first one is
P implies the negative of Q is true in 2, 3, 4. So this is true in second, third, and fourth line. Q is true in first line and third line. Q and negative P is true in third and fourth line. Now, what is the common in all? Common is 3. So it means this is a valid argument. So this is a valid statement because all 3 are true in line 3. So this is the way by which we can check the validity or invalidity of the argument. कोई आर्गुमेंट वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट देखने में ही ट्रू लग रही है. स्टेटमेंट है इफ आई विल सिलेक्ट इन IAS एग्जामिनेशन देन आई विल नॉट बी एबल टू गो टू लंदन. इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर मैं IAS एग्जाम में हूं, सिलेक्ट हो जाता हूं, तो मैं लंदन कहाँ जा पाऊंगा फिर? लंदन जाना मतलब परमानेंटली लंदन जाना. आई एम टॉकिंग अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट. हाँ, अगर ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि इफ आई विल, अगर आप गलत स्टेटमेंट की तरह ले, इफ आई विल सिलेक्ट इन IAS एग्जामिनेशन आई विल गो टू लंदन, तो वो वैलिड आर्गुमेंट नहीं आएगा. आप गर्भ चेक भी कर सकते हैं कि मैं IAS में भी सिलेक्ट हो रहा हूं और मैं वैलिड मैं लंदन भी जा रहा हूं परमानेंटली. तो इन दैट केस इट विल नॉट बी जस्टिफाइड. और साथ में ये भी उन्होंने दिया हुआ है कि सिंस आई एम गोइंग टू लंदन आई विल नॉट सिलेक्ट इन IAS एग्जामिनेशन. तो वो दोनों का मिक्सचर है और उसकी वैलिडिटी हमने चेक करनी है. सो थैंक यू वेरी मच. We will continue in the next lecture, next class.